Good afternoon, students. Prachi Chaturvedi, raise your hand. Okay. Deep Mehta, raise your hand. Very good. Nimisha Kamble, raise your hand. Yes, good. ठीक है. Right? नया कुछ वर्क शुरू करते हैं. Right? We have seen a topic in science. 14th chapter हमने देखा. 14th chapter was about sources of energy. Right? We have seen different sources, forms of energy. Now we have again maths. We'll go to chapter number 7. This is called coordinate geometry. Alright. So right now, open your notebook. Chapter is about coordinate geometry, right? It is about geometry, but combination of algebra and geometry, दोनों है उसमें. We will combine both the fields together, algebra and geometry, and that is known as coordinate geometry. Pay attention. One point here. In 9th standard, we have done coordinate geometry, certain examples like this. These are two axes, x-axis and y-axis. They intersect each other. Their point of intersection is known as origin. Now, coordinate geometry is the representing any point with respect to x and y-axis. कोई भी point x-axis और y-axis से कहाँ पे है, कितना दूर है, वो हम represent करेंगे coordinate geometry से. For example, these are the points. We have one particular point here. This is the point. Now we want to locate this point, right? With respect to x and y axis. So what we do, we join it with x axis, we join it with y axis. Points, these are the coordinates. We represent it by x and y axis. First number 2 is called value of x coordinate. X axis पे मतलब यहाँ पे perpendicular ड्रॉ किया तो मिला 2. Second point is 3. तो 3 की वैल्यू y से मिली, so it is obtained from y coordinate. Right? So we represent this point with respect to x and y axis, that is coordinate geometry. Suppose we have any other point here. Value of x is, for example, -5, y is -2. Now after getting other point, one point here, we want to find distance. दोनों के बीच में कितना distance है, वो निकालना है. तो वो distance निकालने के लिए we have formula that is known as distance formula. Correct? X और y axis है, यहाँ पे भी x और y axis है. Right? Another name is also there. X coordinate is also called abscissa. And y coordinate is called ordinate. Right? So point is represented by 2, 3. We can say value of abscissa is 2. Value of its ordinate is 3. X or y axis, x और y coordinates. हमने याद किया था पहला अल्फाबेट है तो a abscissa और दूसरा है तो ordinary से बन गया name ordinate. Right? We'll write few lines about this. Open a notebook. First of all, you write chapter number 7, coordinate geometry.
Then write down, no need to draw. दूसरा ड्रॉ कराता हूं मैं, एक काम करो, ड्रॉ सिंपली एक्स और वाई एक्सिस सब. टेक 2 पॉइंट्स, एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट ले लो, वाई पे थोड़े पॉइंट्स ले लो. Now take 1 point, x की value 3, y की value 4, 8.34. From this point 3, draw perpendicular यहाँ पे. This is called x coordinate. 3 को circle करो, and below 3 write down x coordinate. x axis पे जो ड्रॉ किया वो बना, वो है x coordinate. पॉइंट को y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. This point is 4. 4 को हम कहेंगे y coordinate. X coordinate, we have another name that is called abscissa. So below it write down ABSCISSA, abscissa. With y coordinate ordinary, so make it ordinate. Y coordinate also called ordinate. Now remember, what is x coordinate? X coordinate is considered as, here x coordinate value is 3. So it is the distance between that point and y axis. And x coordinate 3 कहां से मिला? हमने ये ड्रॉ किया, right? This is y axis. Y axis से ये distance जो है, इसे हम कहेंगे x coordinate. So below this x and y axis, write down 2-3 lines लिखनी है objectives के लिए. So write down distance of a point, distance of a point from y-axis distance of a point from y-axis is called x coordinate. Distance of a point from y-axis is called x coordinate. Same way, distance of point from x-axis is called y coordinate. देखो, y coordinate ये रहा 4, तो उसका distance जो है 4 का हम x-axis से मेजर करेंगे, ठीक है? So this is perpendicular distance from x-axis to the point is known as y coordinate. So write down, यहाँ पे इस तरह ये और ये ड्रॉ कर लेना, अलग पेन या पेंसिल से थोड़ा. Then write down distance of a point
axis is called y coordinate और कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का दूसरा नेम है ब्रैकेट में लिखो it is called ordinate x कोऑर्डिनेट उसका दूसरा नेम है एक्सिसा करेक्ट काम के ऑब्जेक्टिव्स है ना ऑब्जेक्टिव्स के पेपर में अगर लिखना है तो काम में आए ऐसा चल और एक दो पॉइंट्स लिखते हैं नेक्स्ट वन एस्ट्रिक बना के लिखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन x axis are of the form x0 x axis है तो y की वैल्यू नहीं है y0 नेक्स्ट लाइन coordinate of a point on y-axis coordinate of a point on y-axis is of the form 0 y next one more important point write down coordinate geometry has been developed as algebraic tool for studying geometry of figures. Algebraic tool for studying geometry of figures. Right? और करके लिखो studying geometry with algebra geometry करना geography ना कहने studying geometry using algebra is coordinate geometry right or it's a branch of mathematics which links with algebra and geometry. Next line links algebra and geometry. Next line coordinate geometry is widely used in the field like physics, engineering, then navigation, seismology. Arts.
coordinate geometry is used in these fields: physics, engineering, navigation, right, to find direction; seismology, to study Earth's crust, right, earthquake ke pehle to study; arts. One more thing, in this chapter we will get one more formula to find area of triangle. Area of triangle की formula ये half base into altitude, right angle triangle है तो एक formula है, Heron's formula है. We will see one more formula, right? Chapter has 3 main formulas and with this certain concepts. AP के जैसा ही है, formula 3 ही है, but बहुत सारे concepts है, but basic जो है वो clear हो जाना चाहिए. Write down part 1. In part 1 we have distance formula. समझ लेना perfectly. Distance formula लिखना नहीं अभी. Wait. 2 points are given. Point A, its coordinates are x1, y1. This is point B, its coordinates are x2, y2. Now, using coordinates, we want to find distance between the 2 points. Now, distance between 2 points is obtained by the formula AB is under root and the x coordinate ले लेंगे. The formula is x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 square. Right? जो भी coordinates है वो हम लिख देंगे x और y दोनों के. First point, so we take x1, y1. Second point, coordinate x2, y2. And this is nothing but distance formula. Correct? लिखना नहीं अभी, समझो. For example, 2 points are given. This is point P. Coordinates are 2, 3. Point Q. Coordinates are 4 and 7. We want to find distance between them. So what we will do? Point है उसके नीचे ही हम लिख देंगे x1, y1. दूसरे के नीचे लिख देंगे x2, y2. बस अब डिस्टेंस निकालना है. Distance is PQ. So PQ is equal to under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 का square. And then we put values. x1 is 2. So we write it as under root x1 2 minus x2. Value of x2 is 4 whole square plus y1 is 3 minus y2 7 whole square. And then we do simplification. That is the distance. Correct? Suppose points are x and y. Coordinates -4, 3, -5, -8. जो भी पहले आया वो हम लिख देंगे x1, y1. इसके नीचे लिख देंगे x2, y2. We want distance between point x and y. So we write it as xy is equal to under root x1, which is -4 minus x2 -5. क्यों? नेगेटिव सिंबल है तो वहां ब्रैकेट और एक बनाना पड़ेगा. -4 we write -4 minus -5 और फिर बना देंगे स्क्वायर ब्रैकेट प्लस y1. तो y1 की वैल्यू है यहाँ पे 3. तो we write 3 minus y2 minus 8 whole square. ये कर दिया. Next step, we'll simplify this. Inside bracket, it is -4 minus plus 5 का square plus 3 minus plus 8 का square.
So minus 4 plus 5, ये बनेगा 1 square, 8 and 3, 11 square, and simplification. Right? So this is distance formula. We will apply like this. पहले एक काम करते हैं. You write simply the formula. फिर sums करते हैं. Write down. We will divide this chapter in 3 parts. Part 1, distance formula. Write the formula. I'll explain concepts. चलो one example करते हैं. Right now, find distance between the point. Find distance between minus 3, 4 and minus 7, minus 9. 2 points, correct? We want distance between 2 points. We'll do together. Draw one line segment like this. First point, take it minus 3, 4. Second point, take here minus 7, minus 9. Segment draw कर दो. Point के आगे लिखो A, ये point के आगे लिखो B. And then इनके नीचे लिख दो. This is considered as x1, y1. Below it x2, y2 लिख दो. Now A और B already दिया है, so we will write down. Suppose A minus 3, 4 is equal to A की वैल्यू हमने ली है x1, y1. राइट, नीचे की लाइन में लिखो B minus 7, minus 9 is equal to x2, y2. राइट, क्वेश्चन में जो था, बट हमें x1, y1, x2, y2 लिखना होगा. Now distance between the 2 points is denoted by AB. So first we write distance formula. Write down by distance formula. Distance formula use करेंगे अब हम. AB is equal to under points जो है वो x1, y1, x2, y2. So distance formula is x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So write down this is x1 minus x2 whole square.
plus y1 minus y2 whole square. And then put values is equal to under root x1, right? So negative number hai, so we use bracket. x1 is minus 3 minus x2. x2 is minus 7. Got it? x1 is minus 3, x2 minus 7. पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, समझ लेना. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं. स्क्वायर इज आउटसाइड, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, बाहर आएगा स्क्वायर. गॉट इट? देखा, माइनस 3 माइनस माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y1. y1 is 4, y2 is minus 9. तो 4 माइनस माइनस 9 स्क्वायर ब्रैकेट बना के उसका स्क्वायर. ठीक है, बस अब देखो. Now remove brackets. So it is under root minus 3 minus minus is plus 7 whole square plus this is 4 minus minus plus 9 whole square. ये बना. चेक करो, ब्रैकेट रिमूव किया. minus 3 plus 7, 4 plus 9. Then minus 3 plus 7 means ये बनेगा 4 का स्क्वायर, 9 plus 4 13 का स्क्वायर. करो दोनों का स्क्वायर and then square root. So under 4 square is 16, 169. This is the value of AB under root 185. Square root निकलता है तो निकालेंगे. Product of perfect square कहीं है, right? Perfect square मतलब 16, 25, 49, 36 के टेबल में आता है तो लिखेंगे. 25 के टेबल में नहीं आएगा. So this is value of AB. So finally we get distance between 2 points AB is 185 under root 185 units. Clear? See once again. Two points are given, minus 3 and 4, minus 7, minus 9, x1, y1, x2, y2 लिख दिया. Suppose ये लिख दिया हमने, इसकी वैल्यू हमने x1, y1 ली है. Distance A and B, तो distance formula AB, x1 minus x2 whole square. कोई यहाँ से करे तो भी यही आएगा. If you write x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1, then also you will get the same answer. One more example, you try it. 2 points, minus 4, minus 7 and 3, 10. ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करो. चलो
x1 y1, this is x2 y2. पॉइंट्स के नेम नहीं दिए तो स्टैंडर्ड ले लो a और b. So let a -4 -7 is our point x1 y1. b 310 is x2 y2. बस यूज करो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी. एंड पुट वैल्यूज. चलो आंसर निकाल दो. -4 -3 square plus y1 -7 -10 whole square -4 -3. सो ये बन गया -7 -7 बेस -17 का स्क्वायर कर दोगे. -7 square 49 289 338. Check it. प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कहीं ना कहीं है तो ट्राई करो. सिक्सटीन 25 36 के टेबल में आता है तो देखो. नहीं है तो यही आंसर. ठीक है. वैल्यूज आप यहीं से रखना. देखो यू आर राइटिंग दिस बाजू बाजू में बट x1 की वैल्यू यहां से ही मिलेगी. x1 -4 y1 -7 x2 3 y2 10 यहां से वैल्यूज मिलेगी. बस वही रख लेंगे. Now we have main concepts. Distance formula आएगी बट अलग अलग हम कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे वो समझ लेना. यही इंपॉर्टेंट है. Concepts, or you can say these are now fundamentals. जनरली ये नहीं होगा कि फाइंड डिस्टेंस बट कहीं ना कहीं कोई फिगर दी होगी. वी हैव टू डिसाइड टाइप ऑफ फिगर या कुछ प्रूव करना होगा. सो फंडामेंटल्स लिखते रहना. फंडामेंटल्स नंबर 1 कोलिनियर पॉइंट्स. तीन पॉइंट है एक लाइन में है ऐसा प्रूव करना.
कोलिनियर पॉइंट्स मींस पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। देखो क्या होगा, फॉर एग्जांपल 3 points are given, this is A, B, here is C, we need to prove 3 points are collinear। तो हम क्या करेंगे, तीनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। we will find AB, we find BC, we find AC, right? सबसे बड़ा डिस्टेंस, right, जो longest distance है, that should be the addition of 2 shorter distance, तभी होगा कोलिनियर पॉइंट्स। सपोज A और B के बीच में डिस्टेंस है 10 यूनिट्स, B और C का आया 15 यूनिट्स, तो A और C का आना चाहिए 25। तो ये हुआ मतलब 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये नहीं हुआ तो दे आर नॉट कोलिनियर। सो कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने हैं, उसमें क्या करेंगे, वी फाइंड 3 डिस्टेंस एंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एडिशन ऑफ 2 शॉर्टर डिस्टेंस, right? Here it is like this, ABC, तो ऐसा होना चाहिए, AC is the addition of AB plus BC। कोलिनियर पॉइंट्स लिखो, फिर मैं आगे 1-2 पॉइंट्स दिखाता हूं। ड्रॉ अ लाइन, ठीक है? ये रहा कॉन्सेप्ट, इस तरह प्रूव करेंगे। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ 2 शॉर्टर डिस्टेंस। जो छोटे डिस्टेंस है उनका एडिशन करो, बड़ा हो जाए तो कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस, समझ लेना परफेक्टली। नंबर 2, number 2 is equidistant point। equidistant points or point on perpendicular bisector। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट होगा वो भी इक्विडिस्टेंट ही बनेगा। इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स और पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझो क्या है ये। This is one line segment AB। Now we draw perpendicular bisector, मतलब बराबर मिडल में जाएगा और उसका परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट? This is called perpendicular bisector। Now if we take one point here, यहाँ पे perpendicular bisector पे पॉइंट लिया हमने, suppose the point is P, so this point P should be equidistant from AB and AP, मतलब इसका B से डिस्टेंस, इसका A से डिस्टेंस इक्वल ही बनेगा। Why? It is a point on perpendicular bisector। और जब पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये दो सेगमेंट्स है, this segment and this segment both are equal। So we will prove, use the concept PA equal to PB, PA equal to PB, करेक्ट? यहां से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब A से भी P का डिस्टेंस और B से P का डिस्टेंस सेम है,
तो ए और पी का डिस्टेंस है एपी या तो पीए, बी और पी का डिस्टेंस है बीपी या तो पीए। तो पीए एंड पीबी शुड बी इक्वल, राइट। दो कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर दिया है पॉइंट इक्विडिस्टेंट पॉइंट, मतलब P point is equidistant from A and B, या तो ऐसा दिया है A and B two equidistant points from एक point P, या तो point on perpendicular bisector, right? लिख दो concept, आगे सम्स करेंगे। Equidistant और point on perpendicular bisector। Equidistant points. Now we have triangles. Different types of triangles we will prove. लिखते रहना साथ में। Number 1, equilateral triangle. Equilateral means all three sides are equal. Triangle is ABC, तीनों equal है। इसका मतलब we will prove AB equal to BC equal to AC. होंगे सब। Prove that it is equilateral triangle. एक दो है बट कॉन्सेप्ट लिख दो, कुछ भी है प्रूव कर सकते हैं। Number 2, isosceles triangle. We will prove two sides are equal, third side is different. Triangle ABC, दो साइड इक्वल है। We can prove AB equal to AC not equal to BC. Means it is isosceles. AB AC इक्वल है, तीसरी साइड डिफरेंट है। Number 3, scalene. Scalene triangle, all three sides are different. So AB is not equal to BC, not equal to AC. तीनों different है, right? Scalene prove करना है, तो what we will do? We will find three distance and then we'll show all three are different. So it is scalene triangle. Number 4, right triangle. Right triangle we want to prove. So we will use Pythagoras. Right angle triangle prove करना है, what we will prove? If AC square is equal to AB square plus BC square, ये हो गया मतलब वो right angle. Biggest side is hypo. We will find square of biggest side. Square of
यही याद रखना है सब कुछ, और ये भी याद रखना नहीं है, समझना ही है। यू नो ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, स्केलेन क्या है, आइसोसेलेस क्या है, राइट एंगल क्या है, वो आपको पता है। बस आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करनी है अंदर। नाउ वी हैव क्वाड्रिलेटरल्स। Quadrilaterals. Four vertices are given. We need to prove quadrilateral is parallelogram. So parallelogram means we will show opposite sides are equal. है ना? Lengthy हो जाएगा काफी। Parallelogram prove करना है। So first we will take as opposite sides AB और CD equal है. Number 2, AB और BC equal है. Number 3, diagonals are not equal, right? If AC and BD you take, so AC's length is less compared to BD. Figure से पता चलेगा B और D का distance ज्यादा आएगा, A और C का कम. So AC not equal to BD. Fourth point we can show, that is diagonals bisect. Bisect each other, midpoint में कट करेंगे. Right? सभी प्रूव नहीं करना है, but we will prove any three of this. This we will take A और B, तो ले लेंगे first and second. इसमें से कोई भी एक या तो diagonals equal नहीं है, या तो diagonals bisect each other, middle part में divide करते हैं. और bisect के लिए we will use another concept, that is midpoint formula. आएगी आगे. Number 2, sometimes we can prove rectangle. अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है, we have different ways proving rectangle. Opposite sides are equal, diagonals are equal, plus here it will make right triangle. ये right angle triangle बनेगा. So that also we can prove. So rectangle, opposite sides, the same concept. You can write opposite sides equal. Next line, diagonals equal. Number 3, inside it you can use Pythagoras formula. Right? Pythagoras formula. ये भी लिखो, ये भी prove करें. Same way, square. So we will prove all sides equal. Rhombus. All sides equal. Cross square and rhombus will write. All sides equal वो तो आएगा, but in square diagonals are also equal.
sides equal, diagonals equal, sides equal, diagonals not equal. चल एक दो सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड डिस्टेंस फॉर्मूला. Right question. I'll give 2 points. Simply you find distance. Find distance between the points. Distance between the points 8 minus 5 and 6 minus 8. करो चलो शुरू करो. थर्ड या फोर्थ स्टेप ऐसा कुछ आएगा चेक कर लो. चेक करो रूट 13 आ गया ऐसा आता है. ओके चलो नेक्स्ट one more 2 points I'll give minus 6 7 and minus 1 minus 5 minus 6 minus 7 minus 1 minus 5.
169 13 ये आए चेक कर 25 और 12 144 अंडर रूट 169 right next find distance between the points R A plus B A minus B and S A minus B minus A minus B. Right? Points are in form of A and B. So for easy calculation we take नीचे लिख दो x1 y1 below it x2 y2. Now distance between two points R and S. Distance formula RS is x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 का square. Stop writing. देख लेना. We will put values x1 a plus b. x1 की value है a plus b minus x2 a minus b whole bracket square plus y1 की value a minus b minus y2 की value minus a minus b whole square. Right? Square bracket का square. बस अंदर का ब्रैकेट रिमूव कर देंगे. This is a plus b minus a minus minus plus b whole square plus this is a minus b minus minus plus a plus b whole square. Right? Then we simplify. Minus a plus a gone, minus b plus b gone, right? So क्या बनेगा? This is RS is equal to under root b and b to b का square यहाँ आएगा a and a which is 2a square. Now we remove bracket. So RS is equal to under root 2b. This is 4b square plus 4a square, and then we take 4 out, right? Root के अंदर 4 बाहर आया, bracket में रहेगा b square plus a square, and then we can find root. Square root of 4 is 2 under root b square plus a square. किसकी वैल्यू है ये? RS की वैल्यू. Square root of 4 is 2 b square plus a square. Got it? Once again, समझो. Values रख दी a minus b, a minus b, a plus b, whatever. Bracket remove किया. Minus minus plus, minus minus plus, minus 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 plus, minus minus. हाँ यहाँ पे भी plus हो जाता. गड़बड़ करी. Let me check question. Minus a minus b. काम करते क्वेश्चन में ही यहाँ प्लस कर दो माइनस प्लस. करेक्ट? क्वेश्चन में एक मिनट था. क्वेश्चन में मेक इट माइनस a प्लस b. यहाँ प्लस कर देना. Minus a plus b, right? So this is minus a plus b, minus minus plus, minus plus minus,
4b² 4 कॉमन हो गया। हाँ, इसीलिए काफी सारे हैंड रेज भी है, चलेगा, राइट? करेक्शन कर दिया है, कर लो। चल से बराबर से चल कर ही डालो जो भी आया। Right, next one. Write down. Do the points. Do the points 3, 2, -2, -3, and 2, 3 form a triangle right? तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बनता है। लिखो if yes then state its type। if yes then state its type। अगर है तो किस तरह का ट्रायंगल है वो लिखना। Points 3, 2, -2, -3 and third point is 2, 3। देखो हिंट देता हूं आपको करना है, right? पहला पॉइंट है विल टेक A 3, 2। सेकंड पॉइंट हम लिख देंगे B -2, -3। थर्ड इज C 2, 3, राइट? ABC लिख दिया। इसके नीचे हम लिख देंगे x1 y1 पॉइंट A, नंबर B below it exactly नीचे लिखना x2 y2 and C x3 y3, correct? So now we will suppose
y1, y2, y3 are the 3 points. Are the 3 points or even points. Correct? Now see, what you will do, triangle prove करना है कि नहीं? तो triangle है तो तीनों के बीच में distance निकालना पड़ेगा. So now you will find distance AB. Formula क्या है AB की? x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 square. Then you will find BC. B x2 यहाँ पे x3 तो formula is x2 minus x3 whole square plus y2 minus y3 whole square. Then we will find AC x1 minus x3 whole square plus y1 minus y3 का square. Right? तीनों values निकालो चलो. AB, BC, AC. Simplify कर दो. First value AB under root 50 check करो. Now we find value BC. Formula is now x2 minus x3 whole square plus y2 minus y3 whole square. Plus करो फिर आगे x2 x3 y2 y3 minus 2 x3 is 2 x2 minus x3 under x2 is minus 2 minus x3 is 2 whole square plus y2 minus 3 minus y3 is 3 whole square. So this is minus 2 minus 2. This is minus 4 square plus the other value minus 3 minus 6 whole square. 4 square is 16, 6 square is 36 under root 52. This is value of BC. Same way you find AC. AC x1 minus x3 whole square plus y1 minus y3 का square. करो x1 minus x3. x1 is 3 minus x3 की value 2 whole square plus y1 की value 2 minus y3 value is 3 minus 2 1 square plus 1 square minus 1 square 1 and 1 here under 2. Right, this is value of AC. अब चेक करो तीनों values. AB root 50
BC √52 और AC की वैल्यू आई √2। क्वेश्चन है डू दे फॉर्म ट्रायंगल। यहां से तो ऐसा लग रहा है दे आर फॉर्मिंग कोलिनियर जैसा ही लग रहा है। क्यों 50 और √2, बट ट्रायंगल बनेगा कि नहीं चेक करते हैं, पाइथागोरस यूज करते हैं, राइट। तो 52 का स्क्वायर √52 का स्क्वायर बनेगा 52, ये बनेगा। Remember, don't write. Biggest side is BC. So now what we do? We will take BC का square under √52 का square. तो ये आया 52। Same way AB और AC का square. AB square plus AC square. AB is √50 का square plus AC √2 का square. Square or square root cut 50 and 2 is 52. Means what? बनाइए right triangle. Correct? So what we get? Therefore, BC square is equal to AB square plus AC square. So by converse of Pythagoras, ये हुआ तो वो right angle बनेगा. So we can say by converse of Pythagoras theorem, converse of Pythagoras से कहेंगे कि triangle ABC is right triangle. Triangle ABC is right triangle, or we can say right angle triangle. BC सबसे बड़ी साइड है तो BC hypotenuse है. So opposite side A, angle A is right angle, and angle A is 90 degree. ये बनेगा है ना. Type of triangle हमने निकाला. Type of triangle is right triangle, and angle A is 90 degree. Right? This is keyword converse of Pythagoras. करो चलो. तीनों साइड्स यहाँ पे है A B B C A C converse of Pythagoras angle A right angle. डिस्टेंस फॉर्मूला के सम्स देता हूँ कुछ होमवर्क में, कुछ सम्स में मैं हिंट भी देता हूँ. होमवर्क फाइंड डिस्टेंस. डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस निकालो. First one -6, 7 and -1, -5.
-4 -7 and 7 11. Number 4 -3 -10 and 3 -1. Fifth sum -5 0 and -2 -8. 5 sums डिस्टेंस फॉर्मूला के हैं, राइट। अब कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर प्रूव करने वाले देता हूं मैं। रेक्टेंगल प्रूव करना सिंपली दिखाना ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हिंट दे दूंगा साथ में। राइट डाउन नंबर 2 prove that points -4 -1 -2 -4 4 0 and 2 3 are vertices of rectangle. Vertices of rectangle. करेक्ट। रेक्टेंगल के वर्टाइसेस है तो क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है वो प्रूव करेंगे। राइट डाउन हिट opposite sides equal, right? And besides this we can prove diagonals are also equal. इसका मतलब क्या हुआ, एक ही सम है, 4 साइड और 2 डायगोनल। यू हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला 6 टाइम्स, 6 बार यूज करनी है, ठीक है। 6 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला। थर्ड सम prove that point A 1 7 4 2 C -1 -1 and D -4 4 are the vertices of square. Square है, again you write in, चारों साइड निकालनी है तो 4 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस 2 डायगोनल 6 टाइम्स यूज करनी। So what you will prove, 4 sides equal, 2 diagonal है, so 2 diagonals equal. So you are using distance formula 6 times. 6 times. Distance formula use करना, राइट। तो होमवर्क में दिया 3 ही सम्स, बट 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे एंड प्रीवियस 5, राइट। 17 टाइम्स तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो ही जाएगी, बस
कल आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कर देना होमवर्क। बाय बाय, जय हिंद। आज तो माइक चालू करना ही रह गया नहीं सबका? हाँ, यहाँ से ही बंद है, कोई बात नहीं, आओ जो, जय हिंद, बाय बाय।